Assalamualaikum everyone, this is Zara Shah and I hope you all are fine. So firstly, congratulations to all the candidates who have cleared the MPT test. Uh, Everyone has performed really well, although the candidates they were so much worried about it, but the performance was really outstanding by everyone in this MPT test. So coming towards the topic, so today the lecture that I've brought you it is about John Locke. Previously in the political science series we had discussed Thomas Hobbes. So today we will discuss the John Locke's theory, philosophy, and later on we will discuss the comparison in the accompanying lectures that what was the difference between the John Locke, Hobbes, and Rousseau philosophy. So, beginning with the introduction of John Locke was an English philosopher and a politician, and he was born in Somerset, England in 1632, 29 August 1632. And his works they lie at the foundation of modern philosophical empiricism and political liberalism, and he was basically an inspirer of both the European Enlightenment. Enlightenment का period you must know कि वो क्या है, and the Constitution of United States. And his philosophical thinking they were close to that of the founders of modern science, especially Robert Boyle, Sir Isaac Newton, and the other members of the Royal Society. His father he had been a part of parliamentary army during the Civil War, and this was the reason that he had anti-royalist views, because when he was only 10 years old, civil war it broke out in England, and his father he took the side of parliament to fight against him in the civil war, to fight against the king. Secondly, Locke was empirical, and like Hobbes, हमने discuss किया था Hobbes में that Hobbes also witnessed, he had an opportunity to witness the civil war. So Locke he also had the opportunity to witness the civil war and its consequences. So, due to this reason, he viewed everything with an outlook of reality, and he took the side of people who were anti royalist. And in the public life, he was an opponent of Cromwell. Ab Cromwell कौन था? Basically, his full name is Oliver Cromwell, and he was an English general and a statesman who first as a subordinate and later as a commander-in-chief, he led the armies of the Parliament of England against the King Charles I during the English Civil War. और ये जो सिविल वॉर है ये यही है which we are discussing कि Locke has witnessed. So in the public life he was against this General Cromwell, and he used to criticize the Cromwell despotic functioning, and Locke was also accused of conspiracy against King Charles II, and resultantly he sought asylum in Holland. एंड और वहाँ पे जो है इसकी मुलाकात जो है विलियम ऑफ ऑरेंज से हुई, एंड लेटर ऑन विलियम ऑफ ऑरेंज ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द ब्लडलेस रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड इन 1688. After his return to England, जो Locke है, he occupied several important public positions, and he retired from his public life in 1704, and he died in 1704 as I have told you before. Because जो Locke है, as I've told you that he occupies several important positions, public positions, like he had been the diplomat, and he had been in civil services, civil servant, he had been a civil servant. तो resultantly क्या था कि he had practical experience of almost all the aspects of social and political life. और जैसा मैंने आपसे पहले बात की कि he was empirical, तो इसी वजह से जो है ये जितने भी एक्सपीरियंसेस थे प्रैक्टिकल लाइफ के, बिकॉज ऑफ वर्किंग एट डिफरेंट पोस्ट, तो रिजल्टेंटली जो है दिस ऑल enabled Locke to see everything in real perspective. आइडियलिज्म से हट के ही यूज टू सी थिंग्स विद द रियल पर्सपेक्टिव. और ये सारे जो अभी हमने सारे जो रीजंस वी हैव पॉइंटेड आउट, और ये जो सारे हमने इंट्रोडक्शन में जो सारा डिस्कस किया है, ऑल ऑफ दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉक्स पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी. ये जो है इस सब बातों का जो रिज़ल्ट था, इट वाज द फिलोसफिकल थॉट ऑफ द लॉक्स.
So this was a brief introduction of Locke's. Now in the next slides we will discuss the social contract theory that was put forth by John Locke. So now let's see that what were the main points of the John Locke social contract theory. As previously discussed, Hobbes also put forth his social contract theory. Similarly, आगे जो हम रूसो पढ़ेंगे तो उसमें भी we will study the social contract theory of Rousseau. So all these three philosophers, they have put forth the social contract theory in order to explain the origin of the state. और ये origin of state किस तरह उन्होंने explain किया है in terms of social contract. Format जो है of the theory of all three philosophers, it is same, it is identical, and it basically comprises of the human nature, their perspective on state of nature, and then their views on the nature of conflict, including the social contract, and then lastly the establishment of the state. So before moving forward, first let's revise that what social contract theory or what was the theory of the Hobbes. So, as discussed before, that Hobbes he advocated the absolutism. So, what was absolutism? If we just explain it briefly here, absolutism it basically means all powerful state. तो social contract theory का जो basis थी of Hobbes, it was absolutism, that there should be an all powerful state. And in his social contract theory he wanted to show that the people they need to be governed for their own protection by a leviathan, or leviathan we discussed that it means that the all powerful and supreme authority. And throughout his life, Hobbes believed that the only true and the correct form of the government it was absolute monarchy. तो यही absolutism का जो है वो concept है. And he strongly believed in the monarch's absolutism. और उसका ये belief था कि king has the right to wield the supreme and the unchecked power over his subjects. और यही सारी बात जो है he argued forcefully in his work Leviathan. तो ये briefly था कि हमने Hobbes में क्या डिस्कस किया. It was all about absolutism, all about the all powerful state, and that all the powers they basically lie with the king, and he has the right to wield supreme and unchecked power over his subjects. नाउ अब आपके पास जो ये लॉक है तो लॉक ऑब्जेक्टिव वॉज बेसिकली टू जस्टिफाई लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. हॉब्स का हमने एक दफ़ा इसलिए डिस्कस किया सो दैट यू कैन गेट द आइडिया कि ही वॉज जस्ट ऑफ द व्यू एब्सोल्यूटिज्म. ठीक है, लेकिन लॉक का जो है कॉन्सेप्ट इट वॉज कि एक लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए. वी विल डिस्कस इट इन डिटेल कि इसका क्या मतलब है लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ जॉन लॉक. लेटर व्हेन वी विल डिस्कस रूसो, तो रूसो ने अगर इफ़ आई ब्रीफली एक्सप्लेन यू तो ही कंडेम द डेस्पोटिज्म वी विल डिस्कस, आपको पता भी होगा बट वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन. एंड ही प्रोवोक पीपल टू रेवोल्यूशन. सो ये तीनों में एक बेसिक फ़र्क है, एक मेजर डिफरेंस है इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरीज़ में, उनकी फाउंडेशंस में, कि तीनों की जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरीज़ जो है वो किस कॉन्सेप्ट्स पे किस व्यूज़ पे जो है वो बेस करती थी. एंड ऑब्वियसली दीज ऑल वर बिकॉज ऑफ देयर सराउंडिंग्स, उनकी सराउंडिंग्स में जैसे हालात थे जिनसे वो गुज़रे थे. एंड बाय व्यूइंग ऑल दोज थिंग्स, तो उस सारे जो जैसा हमने लॉक का पढ़ा कि जितनी भी हमने बातें जो ऊपर डिस्कस की थी, दिस वाज द रिज़ल्ट कि उसकी जो फ़िलासफ़ी है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि देयर शुड बी लिमिटेड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. तो ये सराउंडिंग्स के जो आपके जो सराउंडिंग्स के हालात होते हैं, तो ये जितने भी फ़िलासफ़र्स थे उनकी सराउंडिंग्स के हालात जो हैं, उनके सराउंडिंग्स में जो कुछ हो रहा था इट ऑल इन्फ्लुएंस देयर पॉलिटिकल थॉट. So the points that we will be discussing in the Locke social contract theory, it is about his perception on human nature, his perception about the state of nature, and his views on the nature of conflict, on the state and government, and lastly his advocacy of constitutional government. So now let's discuss that what was Locke's perception of human nature. Locke's political theory, it lies on his perception of human nature, and unlike Hobbes,
whose view was that the man is quarrelsome and aggressive, Locke believed in the goodness of human nature. और उसका मुताबिक जो है people they are fundamentally decent and they love to live in an order and they are society loving. Order आएगा तो it will build in society. So Hobbes का view, Locke का view जो है वो ये था, and moreover he also believed that the people are capable of ruling themselves. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि एक फ़िलासफ़र की जो पॉलिटिकल थाट होती है या फ़िलासफ़ी होती है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइम्स इन विच ही लिव्ड एंड ही वाज इन्वॉल्व. तो लॉक की भी जो ये थ्योरी थी, इट बेसिकली was the result of his surroundings. It was the result of the circumstances in which he was living at that time or he faced during that time. और जब आपको मैंने प्रीवियसली आपको मैंने बताया कि लॉग वॉज accused of the conspiracy against King Charles II, and then later on he sought asylum in Holland. So during his years of distress and this political exile, he witnessed the vicious aspects of human nature, but at the same time he had also experienced the goodness of human nature. तो दोनों चीज़ों को उसने फेस किया. बट देयर फॉर आप अगर उसकी परसेप्शन को देखें ह्यूमन नेचर की, इट इज़ नॉट एज मच सिनिकल एज हॉब्स के तो हमने पढ़ा था ना कि ही थिंक्स ऑफ द ह्यूमन एज लाइक वो ये कहता था कि मैन आर एज मच ड्राइवन बाई इम्पल्सिस एज एनिमल्स और दीज आर सेल्फ सेंटर्ड ईगोइस्टिक एंड सॉलिटरी. हॉब्स का तो बहुत जो है यू कैन से इट वाज बहुत एक्सट्रीम का एक जो था ह्यूमन नेचर के हवाले से, उसका एक एक्सट्रीम पे बहुत जाके ही थॉट ऑफ मैन एज अ सिनिकल. लेकिन जो लॉक है, बिकॉज ही ऑल्सो एक्सपीरियंस द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर, तो हिज थॉट अबाउट ह्यूमन नेचर वॉज नॉट एज मच सिनिकल एज दैट ऑफ हॉब्स. अब अकॉर्डिंग टू लॉक जो है मैन दे आर नेचुरली इन अ स्टेट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, एंड दे आर बॉर्न फ्री. नेचुरली ही दे आर इक्वल. और सेकेंडली जो पॉइंट हमने कहा है दैट दे आर बॉर्न फ्री, तो ये जो है लॉक का जो है परसेप्शन था अबाउट द ह्यूमन. फिर लॉक ही बिलीव दैट द डिज़ायर इज़ अ स्प्रिंग ऑफ ऑल ह्यूमन एक्ट्स एंड दैट दिस आफ्टर द फीलिंग ऑफ प्लेयर इट इज़ अटेन्ड. जब जो है आपकी डिज़ायर, एक ह्यूमन की जो डिज़ायर है, व्हेन इट इज़ यू कैन से इट इज़ सेटिस्फाइड, तो आफ्टर दैट अ फीलिंग ऑफ प्लेयर इट इज़ बीइंग अटेन्ड बाय द पर्सन, बाय द मैन. जबकि हमने जो है हमने ये पढ़ा था कि अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन नेचर के यहाँ पे हॉब्स की ह्यूमन नेचर को डिस्कस करें, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि ह्यूमन नेचर है ये कि दैट दे विश टू एक्वायर अनलिमिटेड पावर. और ये है कि ड्यू टू दिस नेचर के दिस एक्विजिशन ऑफ पावर इस ड्यू टू दिस नेचर मैन दे आर ऑलवेज दे आर कॉन्टीन्यूसली इन्वॉल्व इन कंपटीशन एंड कन्फ्लिक्ट्स. और जो है क्या कहते हैं कि ही ऑल्सो थॉट दैट कि जितने भी लोग हैं दे ऑल आर सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक, एंड ही बिलीव दैट द इंडिविजुअल इज़ ऑलवेज ऑब्सेस्ड विद हिज पर्सनल प्लेजर्स एंड डिज़ायर्स. लेकिन क्या है कि लॉक ने भी बात की, बट ही सेड कि when the desire is it is basically the you can say it is basically the foundation of all human acts, the desire of getting something, और उसी को जहन में रखते हुए the man perform his actions. लेकिन क्या है कि once the player once the you can say the desire is being fulfilled or the desire is satisfied, जब उसे वो चीज़ मिल जाती है, so the feeling of player it ensues. Secondly, Locke, I'm talking about Locke now, that he maintains that the objective of all human actions is the acquisition of pleasure and avoidance of pain. लेकिन हमने अगर अभी I have told you कि जो Hobbes की थी, he said that it is the wish to acquire unlimited power. And secondly, Hobbes was of the view that fear is a motive behind human action and it is inseparable from human nature. और यही जो fear है, it provides motivation for most of the human conduct. तो हॉब्स का व्यू क्या था कि fear जो है basically it is the objective, you can say it is the motive behind the human actions.
तो जो लॉक है रिपीटिंगली लॉक का यही था कि उसकी फ़िलासफ़ी जो है इट इज़ बेसिकली ही सेज इन हिज फ़िलासफ़ी दैट ह्यूमन एक्शन इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन इज़ बेसिकली द एक्विजिशन ऑफ प्लेयर एंड अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड रिजेंटली जो है human nature state it existed, and according to Locke state exists as a mean for attaining the peace, security and well-being of its individual members. स्टेट का मकसद ही ये था बिकॉज हमने पहले पढ़ा है कि बाय नेचर जो है ह्यूमन बींग्स और मैन दे आर पीस लविंग, दे लव टू लिव इन ऑर्डर एंड सोसाइटी. तो ये सब बातें जो हैं एंड बाद में जो है वी हैव डिस्कस के पीस, सिक्योरिटी एंड वेल बींग के लिए जो है दे बिलीव दैट द सोसाइटी शुड एग्जिस्ट. Secondly, Locke he emphasized that government is a trustee and that works on the behalf of the people, and he said that the historical evidence went to show that all the government authority it was derived from the people and it rested on their consent. फिर लॉक वॉज ऑफ द व्यू कि लोग इतने अक्लमंद हैं, यू कैन से दे आर रेशनल इनफ के टू सी के देयर बेस्ट इंटरेस्ट दे लाइज इन द म्यूचुअल एंड peaceful cooperation. Like in the first point, we discussed that he was of the view that people are capable of ruling themselves. So Locke का यही view था कि they know that their best interest it basically lies in the mutual and peaceful cooperation. So this was about the Locke's perception of human nature. Now let's discuss that what was the Locke's perception about the state of nature. Before starting this, first let's see that what was the Hobbes view. थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको थोड़ा कंपैरिजन जो है वो you will understand कि what was the difference between both the state of nature that were put forward by these two philosophers. So Hobbes जो है he basically painted a very gloomy picture of the state of nature, and he said that the life of man, according to him, in a state of nature, it was solitary, it was poor, it was short, and there was constant warfare, and it was basically basically like a war of every man against every man, and there was constant fear and danger. सो बड़ी ग्लूमी सी पिक्चर थी एंड ही बिलीव कि उसका जो परसेप्शन था कि उस वक्त जो है स्टेट ऑफ नेचर में जो है माइट वॉज ओनली राइट, ये वाला हिसाब चल रहा था, एंड ओनली द टू फैक्टर्स दैट डोमिनेटेड मैन इन द स्टेट वर द फियर एंड द सेल्फ इंटरेस्ट, जैसे हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था. तो ये बड़ी ग्लूमी सी पिक्चर है जो हॉब्स ने जो है हमारे सामने स्टेट ऑफ नेचर की जो प्रेजेंट की थी. नाउ लेट्स सी दैट व्हाट वाज द लॉक्स परसेप्शन अबाउट द स्टेट ऑफ नेचर. फर्स्टली लॉक बिलीव दैट कि स्टेट ऑफ नेचर जो थी इट वॉज प्री पॉलिटिकल बट प्री सोशल स्टेज नहीं थी, जिस तरह के हॉब्स का व्यू था. प्री पॉलिटिकल का मतलब ये है कि देयर वॉज नो पॉलिटिकल अथॉरिटी टू रूल द पीपल. तो जो लॉक का कंसेप्ट है वो ये था कि आपकी जो स्टेट ऑफ नेचर है इट वॉज प्री पॉलिटिकल. एंड सेकेंडली उसके मुताबिक जो है स्टेट ऑफ नेचर एट दैट टाइम इट वॉज नॉट लॉलेस स्टेज. ठीक है, people are and their behavior they were basically under the control of natural law. और आपके पास ये जो नेचुरल लॉ है इट इज़ बेसिकली इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन रीज़न और कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द लॉक. एंड ही सेड दैट कि जो स्टेट ऑफ नेचर है इट वाज गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर. तो लॉक का जो परसेप्शन है वो ये था. अभी हमने डिस्कस किया कि हॉब का परसेप्शन था कि इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज अ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन, लेकिन लॉक का परसेप्शन ये नहीं था. एंड अकॉर्डिंग टू लॉक द स्टेट ऑफ नेचर इट वाज द स्टेट ऑफ गुडविल एंड म्यूचुअल असिस्टेंस एंड देयर वाज अ प्रिजर्वेशन ऑफ पीस और पीपल देयर दे डिड नॉट इंडल्ज इन वॉर, जैसे कि लॉक का जो है जो हॉब का व्यू था. सो इट इज़ ऑल्सो एन डिफरेंस. डिफरेंस हम क्यों यहाँ पे आई वॉन्टेड टू पॉइंट आउट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जब आपके पास ये क्वेश्चन आते हैं रिगार्डिंग हॉब्स, लॉक एंड रूसो, तो होता ये है कि दे मोस्टली यू कैन सी द पास्ट पेपर दे आस्क्ड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन देयर पॉलिटिकल थाट्स, देयर फिलोसफी. तो यही सारे जो डिफरेंस हैं यू विल पॉइंट आउट देयर. एंड डिफरेंस भी यू हैव टू पॉइंट आउट विद, अगर आप हेडिंग्स में कर रहे हैं तो इट्स वो भी ठीक है, बट डिफरेंस में आपको पता है कि मोस्टली यू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द सेंटर
इन द सेंटर एंड दोनों साइड्स पे आप डिफरेंस करते हैं. तो अब नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कितना अच्छा उससे रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंस पे. वी विल डिस्कस दिस पॉइंट कि उसे रिप्रेजेंट कैसे करना है इन द कमिंग लेक्चर्स. सो कमिंग बैक कि अकॉर्डिंग टू लॉक द स्टेट इट वाज स्टेट ऑफ पीस एंड गुडविल एंड नॉट अ स्टेट ऑफ वॉर, जैसे कि हॉब्स का व्यू था. इसके ऊपर हमने एक और जो चीज़ पढ़ी कि अकॉर्डिंग टू लॉक दैट द स्टेट ऑफ नेचर इट वाज अंडर द नेचुरल लॉ, लेकिन हॉब का व्यू जो था इट वाज दैट देयर वर नो कॉमन पावर टू गाइड और टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ और बिहेवियर ऑफ द मैन. इसके बाद जो है लॉक ही सेड दैट इन द स्टेट ऑफ नेचर पीपल वर फ्री एंड इक्वल. हमने हॉब्स में पढ़ा कि हॉब्स बिलीव दैट इन स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज द रूल ऑफ दैट माइट इज़ ओनली राइट. ठीक है, तो वो वाला जो है वो रूल था अकॉर्डिंग टू हॉब. बट लॉक बिलीव दैट इन द पर्सनल लिबर्टी ऑफ द पीपल. ठीक है, और ही said that in a state of nature all people were free and they were equal and there was equality not in intellect, physical mind or possession, but the people of in the state of nature they were equal in personal liberty, freedom of life, liberty and you can say property जो है आपके पास. इट वॉज एवरीवंस इनहेरेंट राइट एंड इनएलिएनेबल बर्थ राइट, कि जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता था. तो ये उसका जो है ये व्यू था कि स्टेट ऑफ नेचर में जो है हर पर्सन जो है ही वॉज इक्वल एंड फ्री. अब जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए लाइक कि आप फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस इन लॉस दैट अकॉर्डिंग टू हिम आई विल समराइज इट कि इट वाज बेसिकली अ प्री पॉलिटिकल स्टेट बट नॉट अ प्री सोशल स्टेट. सेकेंडली कि आपकी स्टेट ऑफ नेचर वाज अंडर नेचुरल लॉ. थर्डली उसने ये कहा कि इट वाज द स्टेट ऑफ पीस एंड गुडविल. And then we discussed that there was an equality in the personal liberty in the state of nature. So अगर आप ये सबको देखें तो you can just come to the point that it was like a civil society. Hobbes की जो state of nature थी it was very much like a civil society but without a government. So this was the Locke's perception of about the state of nature. In the coming slide we will discuss that what were the some inconveniences about the Locke perception about the state of nature. Now let's discuss that what were the major inconveniences in the state of nature according to the Locke. So, according to Locke, due to the absence of an established and settled law, every man was a interpreter of the law. Firstly, secondly, because there was no executive power to enforce the law, so every man had the right to execute the law of nature. Thirdly, there wasn't any judiciary, so every man he could interpret the law as per his convenience. Lastly, because कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ में जो है वैरायटी थी एंड बिकॉज हमने ये पढ़ लिया कि वहाँ पे ना तो कोई प्रॉपर लॉ था. सेकेंडली हमने ये डिस्कस किया कि बिकॉज देयर वाज नो एग्जेक्टिव पावर जो कि लॉ को इन्फोर्स करवा सके, सो एवरी मैन हैड द राइट टू एग्जीक्यूट द लॉ ऑफ नेचर. तो हर बंदा जो अपने लिहाज से लॉ को इन्फोर्स करेगा. थर्डली हमने कहा कि देयर वाज जुडिशरी वाज आल्सो एब्सेंट, सो हर बंदा जो है लॉ को अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक जो है ही यूज टू इंटरप्रेट. अब फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट अब हुआ क्या कि वैरायटी आ गई इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ एंड दिस वैरायटी बेसिकली इट क्रिएटेड डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन एंड इन द स्टेट ऑफ नेचर देयर वाज नो पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी. लॉक ने सारे पॉइंट्स दिए ऊपर के वो प्री पॉलिटिकल स्टेज थी, इट वाज अंडर नेचुरल लॉ, हर चीज़. बट उस स्टेट ऑफ नेचर में जो मेजर जो ड्रॉबैक्स थे यू कैन से इनकन्वीनियंसेस थी वो ये थी कि वहाँ पे ना तो कोई एग्जेक्टिव था, देयर वाजंट एनी लॉ, देयर वाजंट एनी एग्जेक्टिव, देयर वाजंट एनी जुडिशरी. और रिजल्टेडली क्या है कि बिकॉज देयर वाज नो लॉ, नो ऑर्डर, नोट अ पर्सन हु कुड एग्जीक्यूट दोज लॉ, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपकी जो स्टेट ऑफ नेचर है इट वाजंट पीसफुल, इट वाजंट स्टेबल एंड देयर वाज नो सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी. And resultantly, people realized these inconveniences of state of nature, and they realized is that these inconveniences could be removed by establishing a civil government by all. So resultantly क्या आया आपके पास? Nature of the contract.
ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो हम जिसकी हम बात करते हैं कि जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो इस रिजल्टेंटली जो है वो वजूद में आया। सो इन द कमिंग स्लाइड वी विल डिस्कस दैट व्हाट वाज द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन लॉक्स व्यू। So now let's see that what was the nature of the contract and what was the purpose of the contract. So the purpose of contract, the main purpose was the protection and preservation of natural rights. Like we have discussed, because of the absence of the law and the executive powers and the absence of the judiciary, every man interpreted the law according to his own convenience, and resultantly they are created in a state of nature. The situation became disorder, and everything was confused, and there was no protection of life, there was no security of liberty and property. So in order to eliminate all these factors and for the protection and preservation of natural rights, that is the life, liberty and property, the state of contract, it came into existence. This contract was being made, and this contract was being formed under with many expectations. So now let's discuss that what were the main features of Locke's social contract. So the first thing that the Locke said, that there were two contracts. The first contract, it was basically it constituted the formation of state, and by the second contract the government was established. So basically, according to Locke, there were two contracts of the civil society, and this contract was made by each with all, and so a single body politic under one government was being formed. Secondly, Locke says कि this contract was specific in nature and it wasn't general, और इस contract के अंदर जो है each individual they didn't had to give up all the natural rights, बट सिर्फ वही राइट्स लाइक द राइट ऑफ इंटरप्रिटेशन या एग्जीक्यूटिंग द लॉस, वही राइट्स जो हैं दे हैड टू गिव अप, बट नॉट द ऑल द नेचुरल राइट्स. सो दिस कॉन्ट्रैक्ट was specific in nature. Then Locke says that there was no absolute sovereign in this contract, and in this contract people they do not surrender their rights to any person, or you can say to any group of people, but to the community as a whole. They surrender their rights to the community as a whole. Hence resultantly the community it became superior. So like I said कि community जो है it became superior, so it means कि there was a sovereignty of the community. So community means people, ठीक है, and the sovereign power was created by the contract. And जो हमने किया कि हर बंदे ने जो है अपना जो they surrender their rights to the community. So resultantly क्या है कि इस contract के result में a sovereign power was created, but it was not in a single man but in the community as a whole. देन ये है कि देवर कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट इस्टेब्लिश हो गया आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्टेट, एवरी मैन विल रिटेन द नेचुरल राइट्स. दिस वॉज बींग मैंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ, एंड द स्टेट विल हैव एन ऑब्लिगेशन टू अपहोल्ड दिस राइट. स्टेट हैज़ द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट दिस राइट्स. Then there was, according to Locke, this was a unanimous contract, and people unanimously decided to give up the power to the community. And the government resultantly unanimous जो है आपके पास unanimous जो है ये contract था being made by the people with their own consent. So hence the government है आपके पास, it would be based firmly upon the consent of the masses. Lastly, according to Locke, this contract was irrevocable. Irrevocable का मतलब ये है कि once a contract is being made, the people cannot revert back to the freedom of the state of nature. कि यही नहीं है कि अभी contract हो गया. Contract basically it wasn't a written contract, but it was a, you can say कि it was a kind of a promise that people made with each other, a community made, और resultantly क्या हुआ कि in order to bring the peace and security within the society. So it was an revocable contract. So these were the basic you can say the basic properties of the nature of contract in Locke's view. In the coming lectures we will discuss the Locke's view about the state and government, and we'll see that what was the Locke's view about the advocacy of limited and constitutional government.
and later on we will also discuss the differences. So this was all about today's lecture, and I hope that it will be helpful for you. If you guys has any question regarding any lecture of political science or even criminology that I have uploaded, you can always ask in the comment section. And do share these videos with your friends or anyone who intends to take CSS or PMS exams, because if not you, अगर आपको नहीं चाहिए तो it would be helpful for your friends, because the basic reason of making all these videos and everything is that to help students who are preparing for CSS or PMS on their own, and they are from the faraway areas, and so do share with them so that they can also take the benefit and they can take the advantage of these videos. Thank you for watching. Allah Hafiz.